live. Okay. So, hello everyone. How's you all are doing? Everyone, please give a shout out on the chat so that we can start the session. Yes. Okay. So, thanks for joining us today. You all must have been hearing of Electrothon for quite some time now. Well, the time has finally come. The dates are marked, the timers have been set, and now we flag off the Electrothon week with the first event. We are more excited than ever. So, we extend a warm welcome to all. And this evening marks the start of the fourth iteration of Electrothon Innovation Illuminating Reality. A one of a kind technical journey jam packed with fun and excitement. The wait is over as we finally commence the first event out of the many lined up just for you. So, without any further ado, Team SPECs welcome you to the much awaited Electrothon 4.0. Here, I, Shivam Gupta, and over my friend Ritik are here to immerse you back in those childhood memories. So childhood memories, right? So Shivam, why not talk about those memories? So if I ask you that when you were a kid, what did you do on a weekends morning? So, Ritik, as when I was child, my routine was fixed. I just used to switch on the television and wait for my favorite show to begin. सबका एक फेवरेट शो होता है जो कोई मिस नहीं करता बचपन में, चाहे वो सुबह आता हो तो हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे उसके लिए, शाम को आता हो तो स्कूल से जल्दी आ जाएंगे, घर वालों से लड़ना पड़े उसके लिए, पर हम हमारा फेवरेट शो जरूर देखेंगे. और मेरा मानना है हमारी ऑडियंस है यहाँ सबका एक फेवरेट शो होगा. सो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑडियंस टू कमेंट डाउन योर फेवरेट शो इन द कमेंट सेक्शन. Art Attack. Jay Sarita Gupta is writing Art Attack. Yeah, Art Many Attack of was them are like, writing Art Attack. Heart Attack is love. Simpler times. Nice. Tom and Tom and Jerry. Jerry. It is also world famous show, Yes, yes. guys. As by my view, Ritik, my favorite show was Art Attack, and Narayal Anna was one of my favorite character in that. You're right, Shubham. वो तो सभी का ही favorite था. Art Attack was indeed every child's favorite show. If I look back in time, I still remember sitting on a weekend morning, glued to the television and waiting for Art Attack to begin. I would gather my cardboard, a pair of scissors, tube of glue sticks, and what not from my collection, and wait to make something exciting as always. Times were simpler and days were sweet back then, weren't they, Shubham? Yeah, Ritik. So why not take a trip down memory lane to those simpler times, to escape the spiraling college assignments and pandemic boredom, to give it to the joy and nostalgia that kindergarten stories bring with them. So, guys, if you still think that Electrothon is just about lines of code and tons of bugs, then we are here to change that. As we bring forth the first guest talk from the horizon of art and design with none other than our host and host, Gaurav Juyal. So, from hosting 70 plus episodes of everyone's favorite art and craft show to having a decade of expertise in education designing, Gaurav sir is certainly luminary to many budding artists and students. An alumnus of India's leading design institution, NID Ahmedabad, and a TEDx speaker. Throughout his career, he left no stone unturned to incite the creative juices of an entire generation. He is also the co-founder of Thoughts and Balls, which is a team of artists who work with children to develop learning methods. With illuminating programs like Decoding Design Careers and Adhyan Shala, Gaurav sir has been impetuous to numerous students to be proficient in creative intelligence and design thinking. An artist, a designer, educator, founder, and mentor, all in all, Gaurav sir is indeed our favorite millennial. Yeah, Ritik. Gaurav sir is indeed our favorite millionaire. So, I am sure the audience is as excited as we are to interact with their favorite art and craft host. So, guys, are you excited? Yeah, we can see the excitement in the comment. So, so let's not test the patience of our audience and start the show.
Hello, people. Hello, Gaurav Wait, sir. Hello, sir. no, good to be here and good to meet everyone here. Although काफी सारे लोग को मैं देख नहीं सकता हूँ, but know that we are there together in one form or the other. And like the team will moderate your questions to me. So please feel free to ask anything throughout the this small talk that we are having. So yeah, thank you for inviting me. And personally, this is the one thing which I love is interacting with students. It's my मेरा एक ही प्यार था. Like you were saying your favorite show, मेरा favorite show बचपन में जंगल बुक था and मोगली वाला, वो भी हिंदी dub, because strangely I don't like dubbings, but at that point of time in 80s and 90s dubbing artists बहुत ही amazing थे. मतलब they actually made the show better than the original, which is a very rare thing to do. So I actually ran away from my school जंगल बुक देखने के लिए. तो मेरा अलग एक कनेक्शन है कार्टून्स के साथ. एंड वहाँ से एक जर्नी शुरू हुआ था, बिकॉज व्हेन यू आर रेडी टू रन अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ कार्टून एंड व्हेन यू आर इन फर्स्ट ग्रेड फॉर एग्जांपल, सो देन इट टेल्स यू कि हाँ, मतलब अगर जब प्रोफेशन चाहिए तो देन व्हाई नॉट. So that's how it began from me, and then animation turned into education and so forth. But so animation was my only, and cartoons were only my passion when I was growing up, apart from things I would do, but like in as a career I'm saying. And but interacting with students, what it did to me was I found a new love. अब बहुत कम होता है ऐसा कि आपका एक you love something so much as a passion and you find something even. um, so I do have my small, होता है छोटा regret होता है कि एक चीज को आप कम concentrate कर सकते हैं या दूसरे पे, क्योंकि you have only 24/7 and 365 days a year, right? And therefore that little कि हाँ, I did not end up animating too much. But working with student is what I really really cherish all the time. So I'm really happy to be here, and it gives me a lot of hope, honestly. Yeah. So thank you, Gaurav, for joining us today. Actually, we have a very curious audience sitting here waiting to interact with you. And we had also collected some questions from the audience and received some great responses. So, with your permission, I would like to call them on the stage today to interact with you. Please, Would we? go ahead, Shivam. Great. Then, so proceeding further, I would like to call Shriya, Sai Shivam, Stuti on the stage for interaction to begin. So we have Shriya with us, Sai also, and Stuti also join. Hello, sir. Very good evening. Hi, Stuti. Hi, Aditi. Hi, Shreya. Hello, sir. Hi, thank. Hello, sir. So, thank you guys for joining us. Shreya, you can start with your question. All right now. So, sir, first of all, I would like to say that I'm so glad to be here. And me and my team, like for us, it's a huge opportunity to share stage with you. So, thank you for joining us today. So, sir, when I was in school, I loved drawing and painting, though I was not good at it at all. So but there were some students like in my class who were like brilliant in art. They like did drawings, painting, sketches, like they were so good. And with that I was kind of, you can say, demotivated, and with time I just stopped. But whenever I see somebody doing that again, now now as a 19 years old, I feel motivated about it. So, what advice would you give me or to any person like me who is just not natural with art but is still willing to do it? And how one should start with it? Okay. So before we go there, before you ask about okay, how to, for people who are not, you can say, career wise into art, but still want to Uh, pursue it, is that the question, yes. So, like, right? not natural, not good with art, but still want to Okay. do it. Okay. Before that, let's say ki, since you're interacting with me, we'll use the first name. Like I'm calling you like Aditi Shubham, you can call me Gaurav. The reason is, I'll tell you, जो सर कल्चर है ना, थोड़ा सा उसका बेस नहीं है, according to me. All One right, sir. is the sir culture has come from colonization. You understand? हमारे colonizer थे हमारे ऊपर, right? They brought in the sir culture. Even for them, the sir culture comes in when the knighthood happens. Nobody uses sir in Britain and United Kingdom just like that. It's a title given by the queen. So आपको knighthood करेंगे, उसमें से title निकल के sir आएगा, right? So neither have I been knighted before, nor is that
even the history is a little brutal why sir came in. So rather, let's use first names. उसका फायदा ये भी है कि then we can talk at the same level. So hierarchy हम खत्म कर देंगे उसमें, right? So practice it. It's a very difficult thing to do. When I ask my students when I'm teaching, कुछ लोग तो रो गए हैं, मतलब just because दिमागी तौर पे they thought कि मैं सर कैसे बोलूं and गौरव कैसे बोलूं, sorry, and they almost cried because the conflict of me offering them a choice versus them wanting to do but unable to do. But just practice. Like I say Stuti, we all can say Stuti. It's no problem there. So Gaurav is just a name. You can just say Gaurav. Is that okay? All Because this right. will keep coming up. Thank you. Now coming to the point. See, when we say art, we have to be a little more. अब ना थोड़ा हमें थोड़ा depth में जाना पड़ेगा चीज़ों के. Okay, we generally in India we operate at a very superficial level. I'm saying generally. I'm not talking about individually you guys. So let's talk about a little more depth, ताकि हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा खुल जाए, है ना? हर लेवल पे हम जितना देखेंगे ना, आपका पर्सपेक्टिव उस लेवल का आपको मिलेगा. फिर आप नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे उसमें पर्सपेक्टिव, तो 360 डिग्री आपके पास एक पर्सपेक्टिव बनेगा. सो विजुअल आर्ट्स अगर हम बोलें तो आर्ट्स इज वेरी बिग. पहली बात, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, थिएटर भी है, डांस भी है, म्यूजिक भी है. तो हम कौन से आर्ट्स की बात कर रहे हैं? बिकॉज दे ऑल आर द सेम इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, एंड विजुअल आर्ट्स के अंदर भी इतने सारे मीडियम है ना. अगर आपको ड्राइंग से प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्कल्पटिंग ट्राई करो, क्ले ट्राई कर लो, ठीक है. यू कैन यूज एक्रिलिक्स, यू कैन यूज वाटर कलर, यू कैन यूज चारकोल, यू कैन यूज डिजिटल एंड सो फोर्थ. मैं नाम बताता रहूंगा, ग्लास एंड सेरामिक्स एंड यू कैन डू सो मेनी थिंग्स. तो अगर आपको एक मीडियम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपको बेसिकली योर होल क्वेस्ट, एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट आर्ट्स बट अदरवाइज द होल क्वेस्ट इज, आपका कैरेक्टर क्या है, हु इज योर कैरेक्टर, and what all that character can do, which also means ki what all that things that character likes. Unless you do it, it's only an assumption. Only once you do it can you strongly say कि ये मुझे पसंद नहीं आया, ये पसंद आया है. Okay, otherwise if you're just talking about concepts कि शायद मुझे पसंद आएगा नहीं आएगा, then वो उसका कोई base नहीं है, right? It's just a speculation. But because we also don't understand ourselves. So first thing is कि when you say कि art, if it's a struggle, like if drawing is a struggle, don't go into drawing. It takes a lot of time to develop a skill, and we cannot force ourselves. Something जो हमें नहीं करना है और हमें कराया जाता है, वैसे जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट्स लाइक कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पसंद नहीं थे बचपन से लेकिन कराए गए जबरदस्ती. अगर ऐसे मार मार के आर्ट कराते तो सबको थोड़ा बहुत आर्ट भी आ जाता, लेकिन कोई कराता नहीं है, वो सही भी नहीं है. आई एम सेइंग, okay, so art as a field anyways, it's a expressive field. It's meant for you to express. That's the whole point of art. Okay, उसका commercialization use भी हम एक discuss कर सकते हैं बाद में, वो अलग बात है. Which means when you turn an illustrator, when you turn a graphic designer, when you turn into a commissioned artist, landscape artist, you can say, n number of mediums are available. वो बात अलग है. लेकिन अगर हम प्योर आर्ट की बात करें एज अ हॉबी, then I'm saying कि you haven't tried enough mediums. Just try. And All right. things will resonate with you basically. And जहाँ पे resonate करेगा वहाँ पे आप अपने आप ही propulsion मिलेगा आपको to put in more effort and put in more number of hours. Okay? But थोड़ा सा effort डालना पड़ेगा. Give a couple of hours to every medium and try कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है. All right. That was like really insightful, and I think I can now sort it out for me. Thank you for थोड़ा that. exploration चाहिए बहुत सारा. एंड दैट्स अ Yeah. फन पार्ट. मतलब आपको पसंद भी है, आपको करना भी है. अब मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास 50,000 ऑप्शन है. सो नाउ गो एंड हैव फन as much as you want with it, and then you can come back and we can discuss problems that you faced, insights that you had. फिर वो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे उसके बाद. Thank you. Thank you for your answer. I'd like to go ahead. या Um, Gaurav. Okay. Yes, I as a kid I really liked your shows. Art Attack was for me was like my entire summer vacation was summed up was Art Attack. I mean, I I've like I've made so many crafts and objects from your shows, learning from your show. I mean, I really loved it. But after reaching a teenager, sixth and seventh class, there was a pressure of studies and education. I mean, it had to be
my focus was shifted. And by 10th and 11th standard, I found myself like I was not interested in drawing and arts anymore. Drawing like detested me. I mean, it really um, made me so sick of it. I mean, I was like who draws AR? I mean, it's so like time consuming and good for nothing. You don't get anything out of it. But I don't know what happened to me. Past year, I had plenty of time. Corona, I was there. I mean, I had nothing better to do, so I thought I should. I mean, start drawing again. And I mean, with you said when I invested time, I realized how comforting actually it is and how good I can do in it. And it was really surprising for me. I had never seen that side of myself, that I can too draw and I can too give ideas and like transfigure my ideas into paper. So, I mean, I really agree with you that one should invest time. But what I found my a struggle in that was I was never able to come up with creative ideas. I was always like copying something, copying some image or some scenery. So my question was this: like how how you came up with those creative and innovative, cool ideas when you were on the show, like creating a pirate ship out of a bottle. I mean, how those ideas came to you? It's Okay, that's a good question. Anything else you want to add, or that's the question? That's the question, a pretty big Okay. one. Okay. So we have to also understand कि there are skills and there is thinking. Okay. दोनों अलग अलग हैं. स्किल आपको नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड करने से मिलता है. एक्चुअली सभी कुछ आपको नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड करने से मिलता है, इवन थिंकिंग, ऑनेस्टली. बट स्किल कैन बी डायरेक्टली बी डेवलप बाय जस्ट पुटिंग, it's a training of muscle. The same regime that a sports person has is the same regime that an artist has, which is they keep doing the same thing again and again. स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ अलग फैक्टर्स दिमाग में रखने पड़ेंगे, विच इज स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेट्रा, बॉडी पोस्चर, सो एंड सो फोर्थ, राइट, टू रीच द ऑप्टिमम वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू अचीव. और दे नीड द फ्लेक्सिबिलिटी, दे नीड द बॉडी मास. वो उनके डिटेल्स हैं ऑफ देयर ट्रेड. बट लार्जली वॉट यूर डूइंग इज माइंड, आईज एंड ब्रेन एंड मसल्स का एक कोऑर्डिनेशन होता है. लार्जली यू आर काइंड ऑफ रिफाइनिंग दैट कंट्रोल ओवर योर बॉडी. बिकॉज कई आर्चरी में फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर ऑफ कुछ हल्का सा आपका शेक हुआ और वो पूरा इन ट्रेजेक्ट्री दैट विल क्रिएट 1 फीट का गैप क्रिएट कर सकता है वो. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो एंड द सेम मसल कंट्रोल इज नीडेड व्हेन यू रियली वांट टू पुट अ थॉट इनटू अ पर्टिकुलर फॉर्म, राइट? Why do you keep sketching again and again? A lot of artists you'll see, पहले वो एक ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर एक शीट रखेंगे, उस ड्राफ्ट से एक और ड्राइंग बनेगी, फिर उसकी तीसरी ड्राइंग बनेगी, फिर चौथी ड्राइंग बनेगी, trying to perfect that shape and trying to have their hand. And some people are great at it. वो एक ऐसा stroke मारेंगे, एकदम perfect कुछ निकल के आएगा. Some people struggle with it. But ultimately it's the muscle, right? मुझे मालूम है दिमाग में मेरे पास है, लेकिन translate तो मेरी body के through ही होगा ना. So body intelligence is a intelligence which is used across domains. आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, आप बाइक चलाएंगे, कार चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, बॉडी के थ्रू ही जाएगा वो, राइट? कॉन्सेप्ट्स तो दिमाग में एग्जिस्ट करता है, बट ट्रांसलेशन हैपेंस थ्रू योर फीट एंड हैंड्स एंड बॉडी. सो बॉडी इंटेलिजेंस को आपको दिमाग में रखना है कि यू हैव टू डेवलप दोज मसल्स विच कम्स विद टाइम एंड विच बिकम्स योर स्किल, राइट? नाउ थिंकिंग का एक्चुअली क्या है कि अभी तक सब लोगों ने इतने सारी यूट्यूब वीडियोस बनाई हैं कि हाउ टू ड्रॉ बेटर, एंड उसकी वही है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू दीज थिंग्स. ये भी आपकी जनरेशन को समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि you can just imagine ki if all the experts are after 10, 11, 20 years of experience, between 10 to 20 years of experience, you are pretty much, you know your field once you have been there, right? सबको इतना ही टाइम लग रहा है. किसी ने सडनली 1 साल में 20 साल का एक्सपीरियंस कैप्चर करने का कुछ नहीं ढूंढा है. आप समझ रहे हैं? तो दैट्स अ लिमिट टू अ ह्यूमन बॉडी. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट टेक्स टाइम एंड देयरफॉर यू हैव टू स्पेंड टाइम. बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करना इज योर मिस्टेक, because all the examples around you have taken time. It's just our wish कि हम जल्दी कर लें उसको. तो वो तो डेटा है ही नहीं मार्केट में, कहीं भी नेचर में, कि इतना जल्दी चीजें होती हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? It's just a desire. But we have to understand how things happen and at a realistic time scale.
Okay, so don't be impatient. First is spend time. Now skills के लिए तो enough YouTube tutorials हैं that you can capture skills. Honestly हैं. You don't have to even go to a art college. You can learn skills if you really want to. Thinking is something जिसके enough tutorials नहीं है. There are no tutorials ऐसे सीखो, right? So thinking is, you have to spend a lot of time thinking, actually thinking, and then design thinking is a good model in that sense, because I'm coming from a design background. I can tell you what they do. ऐसा नहीं है कि बाकी लोग सोच नहीं रहे हैं, बट हमारा जो प्रीवियस एजुकेशन है ना सुति, यू वर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव आइडियाज, वी कॉपी Yes. मोर, बिकॉज ये प्रैक्टिस बचपन से शुरू होनी चाहिए थी. अबाउट about giving you open brief and coming out with solutions, and all of the solutions are correct. You understand? Subjectivity of nature is all subjective. Objectivity of nature is atom, molecule, material, okay, फोर्स, ग्रेविटी, वो भी कई जगह चेंज होते हैं, वो भी उतने ऑब्जेक्टिव नहीं है. ग्रेविटी चेंज हो रही है स्पेस में, कुछ कुछ चल रहा है, साइंटिस्ट आर बैफल्ड, राइट? सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट ऑब्जेक्टिविटी अगर हटा दूं लाइफ में तो सब कुछ सब्जेक्टिव हो जाएगा, विच मीन्स ऑल ह्यूमन इमोशंस, all your decisions are emotional, larger part of it. All your choices of clothes that we all are wearing is a subjective question that you have spent money and time into it. All right, your hairstyle is subjective. So ये सब आपके choices हैं. तो हमारा बचपन से practice नहीं हुआ कि हमें किसी ने enough questions दिए and we were allowed to question back and we were allowed to think extra and also discuss in the class. क्योंकि क्या होता है ना, open thinking का एक problem भी है कि it can create chaos. लोग argue करेंगे और automatically करेंगे, because the whole point is कि the subjectivity of nature is वही है, correct? So Yes. वो argument का आपको practice होना चाहिए. How to sit with 5 people and discuss concepts and then be okay with all 5 either agreeing or not agreeing. That's also okay. But वो हमने practice नहीं किया कि सोचें, कितना सोचें, किसके बारे में सोचें, क्यों सोचें, मतलब सोचने का practice नहीं है अभी हमारे पास उतना. Okay. If I give you, और एक और interesting चीज़ है which I've learned from design is, we think कि ज़्यादा freedom मिलता है तो creative thoughts आएंगे. It's actually contrary. आपको मैं जितना लिमिट दूंगा उतने ज्यादा आपके आइडियाज बाहर आएंगे. अगर मैं अभी आपको बोलूं कि ओके, क्रिएट अ टूल फॉर एन आर्टिस्ट, क्या बनाओगे आप? कोई भी बोल सकता है. यू कैन पुट इट इन द यूट्यूब कमेंट्स आल्सो. क्रिएट अ न्यू टूल फॉर द आर्टिस्ट. और तो 2 लिमिट इसमें भी हैं. मैंने आपको आर्टिस्ट का लिमिट दिया है और टूल का लिमिट दिया है, तो 2 लिमिट दिया आपको. अगर मैं अब बोलूं क्रिएट अ पेंट ब्रश, ठीक है, विच an old person can paint with. So now I have kept the same limit. पेंट ब्रश है, टूल है आर्ट के लिए, बट अभी आपको मैंने एज का लिमिटेशन और दिया है, एंड ओल्ड एज बेसिकली, एंड पेंट ब्रश का बेसिकली. तो थोड़े और फैक्टर्स मैंने आपको लिमिट कर दिया है. नाउ इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू वर्क विद. यू अंडरस्टैंड? You might Yes. not realize it now, but now you have easy things to search. You can search, okay, how do 80-year-old people react? उनका क्या प्रॉब्लम होता है, उनको क्या दिमाग में रखना है, ठीक है. So at least you have somewhere to start. If I just tell you कि create a tool for art, you'll be like, क्या करें मतलब, you know. So creativity actually flows really well within limitations, and you should actually look at limitation as a very happy challenge. जब भी आपको कोई देगा ना कि अरे ये भी नहीं करने दे रहे, वो भी नहीं करने दे रहे, actually if you and of course उसका भी लिमिट है. You can't just put all the limits and say काम कर लो. You need your freedom also. That's not what I'm saying. But you will realize that limit के अंदर creative thoughts ज़्यादा काम कर सकते हैं. And one easy way of creative ideas is do this exercise with your peer buddies. कुछ भी problem statement लो. Could be funny problem, could be a story, could be a product, could be engineering problem, could be management problem, doesn't matter. Sit with 5-10 people and discuss it. And just listen to other people. So what happens is we are relying कि हमें ही सब कुछ generate करना अपने दिमाग से. Now that's only one brain or like a processor. If you listen to 40 ideas now, suddenly you realize कि same problem के 40 iterations बाहर आए हैं. And therefore you have learned from 40 people at the same time. But that requires you to share your work and take feedback. अगर आप ये करना सीख गए early on, you'll actually grow at a much faster pace than trying to recreate everything from scratch by yourself.
So I think आपके generation के collaborative approach is much stronger. You should work with collaborative approaches, and you can all be a small. We all can be broken and incomplete, and that's a good place to be. And come together to complete the for the larger task. You know what I mean? Yes, So, I do. so just search for your question. Search on Google how to questions or questions to develop creative thinking, and try to attempt them with a group. अकेले बोर हो जाओगे possibly. So go ahead with a group and do it. Thank you, Gaurav. Okay, so very good evening, Gaurav. Now, before coming to the question, I just want to tell you that I'm really delighted to share the stage with you. And I have been looking at all your works and your TED Talks. So, from reading about your work and all the things you have done, I got the impression that the things which you are doing are not just for the job's sake, but it is something beyond it. It's more of some when the purpose and passion combines, like the which it gives you the energy. I feel that there is some passion and purpose in your work. So I want to know what is your vision, like what are the things you would like to do in the field of education uh, through art for the children. Okay. Of course, I also come from a kind of a silent rebellion background. मतलब मैं काफी rebellious था बचपन में. I would Yeah, kind of put my rebellious का मतलब है someone who puts his communication forward rudely or abruptly or strongly. That's what. So so a lot of people might not have clarity कि किस direction में जाएं. So you're saying I'm passionate about my work, right? It's also the reason yeah, because I've done मैंने पूरा जिंदगी ना till you can say 30 plus I've been exploring without a worry. It's not just because I'm well off or something. No, I did not give myself the pressure to adhere to social norms, basically. Do you understand? Now when I yeah, say social norms, even art attack is a social norm in that sense. What would a host of an art show do after art attack? क्या करेगा वो? exactly. Now that's a pressure which you have accepted or expected from the society. And because how many times people come to me and say आप और shows क्यों नहीं बनाते, आप art attack में क्यों नहीं करते, और क्यों नहीं करते, YouTube क्यों नहीं बनाते, this, because that's the imagination that they have कि a person who is on a host of a television show वो और क्या करेगा, मतलब that's what a person can do, and also it has that fame value, so उससे बढ़िया क्या होगा. That's also a concept that you might have in your mind. However, I must tell you that once you actually do a task, only then you realize ki whether you love it or not. It might bring a lot of fame and money and whatever, but every task or any action that you have decided or any decision will come at a cost. Do you understand that? Yes, अब वो cost ना अभी आपको पता नहीं लगेगा. Only once you start working you understand, or once you understand a domain you understand the cost you are supposed to pay. So what do you think might be a cost for a television person who works with television? What could be the cost for the person? it could hinder Um, his private life. That might be Private the life, yeah. cause. Yeah, definitely. That was my concern. I wanted to eat my momos and pani puri aram se on the road and without being disturbed, Exactly. right? Yeah, that's a major thing. I would totally do that anonymity over fame any day. You understand? Okay, what else? not getting enough time to uh, recreate yourself, to reinvent yourself. Yeah, not enough. You can't reinvent yourself very easily on television. Yeah, what else? Too much pressure, can't explore more things, just stuck in that domain. या सी अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है कि जो टीवी पे आता है वो बहुत अमेजिंग है, तो फिर आपने अपने आप को वहीं पे लिमिट कर लिया है, ठीक है? बिकॉज अमेजिंग पीपल आर एवरीवेयर अराउंड यू. You have to identify them. And objectively speaking, I'm not the best artist either. I'm very happy to know that you guys liked the show and I was able to communicate it to you very well. However, I'm saying मुझसे better communicators and host रह चुके हैं, and वो भी आपको accept, वो उस बंदे को accept करना पड़ता है, right? Second thing is the nature of the field of media, for example, is such कि ना वो आपका identity को concrete कर देते हैं बहुत जल्दी. Okay,
which means कि someone who gets a particular kind of film उसको वही film मिलती रहती है. किसी को मम्मी ही बना दिया, किसी को साइड किक ही बना दिया, किसी को हीरो भी है तो एंग्री यंग मैन ही बन गया बेचारा. Although they wanted to do many roles, but because उनको एक शो में अच्छा लगा ना, प्रोड्यूसर इज लाइक नहीं ये तो श्योर शॉट हिट होगा आपको हम, क्योंकि एक्सप्लोरेशन का ना एक देयर इज अ डैमेज आल्सो व्हिच कैन हैपन विद एक्सप्लोरेशन. व्हाट इफ यू डोंट डू वेल एंड दैट्स अ मीडिया में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है. इट्स नॉट अ स्टेबल फील्ड एट ऑल. Yeah. For Yeah. example, they also came to me and said, Ki, you are already a face of a known television show. How can we take you? So now your actual work experience is working against you. That's even worse. Do you understand? So that's the cost I'm talking about. Ki, what is it that you want from the field and what does it cost? So I'm not even interested in, like I said, ki, wo jo lifestyle of the media and TV. I was never into it. I was more of a background worker, like animator who works I'm a caveman actually. I'm pretty much ambivert. I like introversion more than extroversion. I don't go out much. I don't meet too many people either. Okay, so I maintain my energy through that. But I had clarity ki things that I like, only that I will do. So media mein I understood very quickly ki what it asks me to do and what it gives in return. I'm like, nahi, theek hai. I loved Art Attack. It happened to me. I did not fight for it. I did not go towards it. It came as an information to me, and I kind of applied, and it happened. As simple as that. Okay. And Yes. so now coming back, I realized that through art, but I'm really grateful to Art Attack for two things. One is that all the love that I get from you guys, okay, which means it introduced both of us together. If I was not on Art Attack, I would not be sitting here in the first place, right? So that's the impact that it had. Secondly, it introduced me to students directly. Like I started working with children. So मेरा ना वहाँ पे, because I hated my schooling in terms of क्योंकि वो बहुत मेरे लिए था problematic. So I realized कि I can make knowledge simpler for students because I started self-teaching myself when I grew up. So I realized कि दुनिया में तो चीज़ें बहुत simple हैं. Actually, everything is fairly simple to understand. There is even rocket science is not rocket science. You just need time, like I said. Um, so therefore, I am in education now because I realize कि things can be simpler. And when you said कि my plan for education, वैसे बोलोगे तो I totally want to change everything from ground up. मतलब boards भी हटाओ, ये सब भी हटाओ, सब कुछ हट जाएगा, लेकिन हो नहीं सकता है. Yeah. Okay, so you have to kind of gulp down your idealistic scenario and Yes. work with what is given to you. Again, coming back to limitation, designing according to limitation. So अगर मुझे अब एजुकेशन डिजाइन करना है तो मुझे लिमिट देखनी है कि ठीक है, सब कुछ तो नहीं हटा सकते हैं, सारे बोर्ड सेट हैं, स्कूल सेट हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेट हैं, सबने अपना एंकर डाला हुआ है सब जगह. नोबडी वांट्स टू मूव बिकॉज अगेन लाइक वी सेड एक्सप्लोरेशन इज अ वेरी chaotic जोन. अभी लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, स्कूल का फॉर्मेट चेंज करेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, अब नया स्कूल ड्रेसेस का भी कॉन्सेप्ट कुछ नया हो रहा है, किताबों का कॉन्सेप्ट नया हो रहा है. नाउ ऑल द टाइम दैट यू हैव सीन chaos which has resulted in actually a betterment, I would say कि okay, demonetization के बाद because we did not have an option, people switched to digital currency. Okay, we have surpassed China. Like हमने मतलब चाइना को पता नहीं कहाँ छोड़ दिया डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में. All right, so India is leading in the world in terms of digital transaction, but it would have not been possible अगर demonetization जैसा एक फोर्स नहीं किया होता लोगों को. I'm not going into the ethics of it because things can be done better and people don't have to go through pain zabardasti to reach a better this thing. Second thing is because of pandemic we came into online education. कोई पिकअप नहीं करता. People would have always said कि ये नहीं कर सकते, चार दीवारी चाहिए, टीचर चाहिए, कॉलेज का नाम चाहिए, उसका अम्ब्रेला चाहिए, तभी पढ़ा सकते हो. But when they realize कि dude ये तो ऑप्शन ही नहीं रहा, and everybody is like अब करना तो पड़ेगा, right? So that's फिर पलटी मार लेते हैं. People just turn their identity when there is no option. As long as they have an option, they always try नहीं 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 ऐसे ही होगी चीजें. And this is a problem with conventional generation, which is coming my father and above. Millennials is the breaking factor in the convention zone because one is उनका एक पैर थोड़ा convention में, एक पैर थोड़ा future में है, तो they have a little sense of what's going on. Even better is your generation because at least हमारे पास इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था जब हम पैदा हुए थे. आप लोग के पास पॉसिबली था जब आप पैदा हुए थे, राइट? नाउ दैट्स अ बिग difference in the generation wise. So see, one thing is I have to it's not ki my plan is with
art education for children. That's a very narrow goal, I would say. Although that's my current goal working with Yeah, Byju's right now. yeah, Okay. exactly. Yeah, that's exactly my role with working with Byju's. But my larger goal is to simplify knowledge, to make you guys comfortable कि पूरी knowledge outsource open source हो चुकी है. You do not have to rely on teachers, faculty, organizations, and so forth. You can literally create your own path, and you can switch path also. वो सारे options open है. You can sell, वो free platform आपके पास है, Flipkart, Amazon, whatever. Logistics के लिए ship rocket and n number of logistics are there. आप किसी को कुछ भी पहुंचा सकते हो, right? You can brainstorm sitting anywhere. You don't have to. You can brainstorm with people in another country. So इतना open market है, तो आप explore करो. You have so many tools available. You just need to see examples of possibilities now, which are already done. तो आपका exposure level का थोड़ा problem है. आपको पता नहीं है कि कितने लोग चीजें कर चुके हैं. So in fact, you guys in your respective domains, कोई CSE का है, कोई engineering का है, कोई electronics का है, and civil का है, go back, see where the cutting edge and where creative ideas in engineering are being applied. Come back and share. Because the thing is, अब ना वो इतना, although we need specializations, लेकिन by the end of it, the real value is कि can you come up with a concept? That's one. Can you execute that concept? That's second. बस दो ही चीजें बचती हैं कि आप सोच सकते हैं कि आप उसको execute कर सकते हैं. Now you decide which side you want to be in. We come from the creative side. We create concepts, but we also have the capability of delivering it. तो हमारा वो और powerful हो जाता है फिर portfolio. We can tell exactly कैसे होगा. तो but हाँ, अगर मैं industrial design field में होता, I'm just saying, Yes. तब मुझे चाहिए होता, I need 10 years of experience so that I can understand the engineering side of life also, if I'm not coming from engineering side. Okay, so I'll not digress into this, but I hope I have kind of given you my insight with art and education. Just want to make it an open source learning platform. सबसे सीखो, कोई एक गुरु नहीं है. You have like a million gurus. Learn from everyone, share with everyone, and work collaboratively. So, and art के साथ, it's not about replicating like what Stuti was also saying. It's about expression. तो अगर आप एक इमोशन क्रिएट करके अगर एक पेंट भी फेंकेंगे ना पेपर के ऊपर, and you can relate to that splat of paint, that is one level of expression has been done. You have started your art journey. उसके बाद उसके various forms and styles and expertise and this and that आता है. But you can always start from art therapy side, which is not so pressurizing. It's all about releasing your expression through colors and forms, basically. Thank you so much, Gaurav. That was quite insightful, and I got to know a lot. Yeah. Thank you so much, guys. Oh, yeah. Continue. Ma'am, I just had a little like follow-up question with that. So, sir, as you said that you had to pay a cost, right, for working in TV or being professional with your work. So from last year, since I joined the college, I am working as a graphic designer. I mean, I'm trying to learn that. And sometimes when we send our designs to somebody, for us they are like creative and we find the colors good or anything, but the person in front of us just rejects it. Okay, and this kind of hurts. And other than that, there is also a burden of being creative within limits, right? So when you find yourself in such situations, what approach do you apply? I mean, this is going to help a lot of my friends, so I'm just asking it. See, it's also half of the problem. There are two sides of the problem. एक है, how well did we do the task? Because there can always be problem with our sense of whatever we have Yes. created also, right? We can't say we have everything we do is amazing. The second part is the person who is actually approving it. Now, if that person actually does not have the sense of either visual arts or communication, and a person of, I'm just saying that that background is sitting on the approval side, then you will always struggle. There is no way out of it. You have to change that person from that decision making zone. Okay, I'm just saying, because this happens very often, not only with you, with professionals. It's a common thing. So what happens is, I'll give you another design tip is, slowly you start putting your foot down. Okay, which comes through Yes. time again, because uh,
being in a field right now, you have made something, although you like it, but you don't know how to defend it. On what basis are you going to put it forward कि यार ये कलर मैंने क्यों यूज करें और कोई कलर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं और ये फॉर्म क्यों यूज करिए और कोई फॉर्म क्यों नहीं यूज कर सकते हैं. You don't have enough objective statements to defend that piece of work. But if you stay long enough, you work for 1 year, you have some understanding. You work 3 years, then you are in a better place, and then you can counter your client or counter your person who is actually saying and say कि देखो ऐसे होगा क्योंकि ये है. A lot of times the problem is clients don't know what they want, right? अब आप जब पहला आइट्रेशन निकालते हो ना, तब उनको पता लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है. उससे पहले उनके पास जीरो आइडिया था. उनके पास ऐसा वेग एक क्लाउड था जिसमें खूब सारे थिंग्स दे हैव सीन अराउंड द लाइफ, उसके इमेजेस हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी वेग फजी. They think they know what they want, but it's generally a very fuzzy zone. So when I take any task, whether it's graphic designing or anything, I first ask them a lot of questions. ताकि मुझे वो क्लैरिटी चाहिए जो मुझे खुद जब मैं डिजाइन कुछ करता हूँ चीजें, तो आई नीड अ फ्यू क्वेश्चंस आंसर्ड एंड आई आस्क देम द सेम क्वेश्चन. उससे क्या होता है ना, उनको भी थोड़ा अलाइनमेंट आना शुरू हो जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मे बी दे हैव नॉट आस्क्ड देमसेल्व्स, राइट? So when I send them a questionnaire and while they're answering it, उनका भी एक alignment होगा, मेरा भी एक alignment हो जाता है, and we come on one page. That is one thing. Second thing is आपको ना focus करना आना चाहिए, because we try to do everything at the same time. We think this is the first and last. Subconsciously, I'm saying, we think this is the last artwork we are going to create. तो इसमें ये भी डाल देते हैं, वो भी डाल देते हैं, वो भी डाल देते हैं, but actually में keep it simple. Actually keep the information should be bare minimum in a graphic if you are using it for communication. ज़्यादा information चाहिए तो tag a link which they go and they can read more about it. But the moment there is beyond an information which is there, it turns suddenly extremely boring and very painful to the eyes, reading a lot of text in a graphic work. So there is what we do is we use the power of visual language. All right? आप इतना भी कर सकते हैं कि आप एक थॉट बबल बनाया, उसमें एक बहुत ही क्वर्की लाइन लिखा, एंड नीचे लिखो इफ यू वांट टू फाइंड मोर क्लिक ऑन दिस क्यूआर कोड और लाइक स्कैन दिस क्यूआर कोड और क्लिक ऑन द लिंक. सो आपका अटेंशन ही तो ग्रैब करना है ना. दैट्स द पर्पस ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन, राइट? You can do it in so many different levels. That's where the creative thinking was coming. Why are we thinking always in a poster level? There is a video going on and उसका कुछ सर पैर नहीं बन रहा, बहुत रैंडम वीडियो है. And then by the end of it, you're like, if you want to know more, just click on like this link. And then it comes over, ये तो Electrothon का है. So आप बहुत सारे, now we are using manipulation of visual language and storytelling. वो मैंने सोच के डाला है, like what I told you, that was my intention, कि एक बहुत random video डालेंगे, that's a story. And उससे क्या होगा कि वो intrigue होंगे कि क्लिक करते हैं इसके ऊपर. But again, that comes down to the detail और कि मैंने डाला क्या है वीडियो को, वो भी हम डिस्कस नहीं करा है, वो डिटेलिंग आउट होगा, राइट? But the concept wise, it can also work. But we don't think in those terms. We generally, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको thinking को break करना है ना, आप लोग को ideas के variations चाहिए बहुत सारे. क्या क्या exist कर सकता है. आप एक बार 1000 example देख लेंगे ना अलग अलग तरीके से, then it becomes so easy. Then you can even mix match all those 1000 ideas or 100 ideas or 10 ideas. But we don't have those variety of 10 ideas. If we have 10 ideas, maybe they're of the same, the scale hai sirf. But I would like to have one apple, one banana, one pineapple, one sitafal or something. So you need a buffet of very, if you can define the extreme spectrum, black and white, the colors and grayscale can fall in middle. So slowly your creative minds generally are thoda divergent thinking mein rehte hain. And maybe this question might come later, but I can give you tips on that also. The more number of domains and fields you practice, the more creative you'll become automatically. This was a really good thing here today. So every thinking has a neural pathway which is connected to it. मतलब हम जो भी सोचते हैं ना, उसका एक न्यूरॉन कनेक्शन बन जाता है दिमाग में, फिजिकल कनेक्शन. So first time सोचने में दिक्कत होगा, second time में दिक्कत नहीं होगा, because the path is already there. If you want to revisit a similar thought, emotion, trauma concept, it's very easy for you to do. All right.
So when I'm working as an engineer and the kind of education I have received as an engineer, that's even more important because engineering is a beautiful field. आपको कितने क्लिनिकल तरह से समझाया, कितने क्रिएटिव तरह से समझाया, वो असली मैटर करता है. कंटेंट में कोई गड़बड़ी थोड़ा ना है दोस्त. उसके रीच में, उसके शेयरिंग में प्रॉब्लम है, राइट? So the thing is, if you work as an engineer, it will create a certain kind of neural pathway. An Indian student as an engineer का neural pathway अलग होगा, American student engineer का neural pathway अलग होगा, क्योंकि हम अलग culture से आते हैं. Is that okay? उनको जितना फ्रीडम मिला थिंकिंग का, हमें जितना फ्रीडम मिला है थिंकिंग का, उससे भी न्यूरल पाथवे का कनेक्शन बनने शुरू होंगे. तो ये इंजीनियरिंग साइड का एक पाथवे, मेरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया दिमाग के अंदर. नाउ इफ आई स्टार्ट डूइंग आर्ट, नाउ आर्ट रिक्वायर्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग. तो आप फील करना शुरू करेंगे तो अलग न्यूरल पाथवेज कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे. ओके इस तरह से मान लो मैं लर्निंग एंड एजुकेशन में हूँ, उससे एक अलग पाथ शुरू हुआ. मैं माउंटेनियरिंग भी करता हूँ, उससे अलग अलग पाथ शुरू हुआ. राइट, आई एम गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, उससे एक अलग पाथ शुरू हो गया. सो आप जितनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ एक्टिविटी करेंगे ना, उससे अलग अलग पाथ बनने शुरू हो जाएंगे, अलग अलग क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट रियली बिट कम्स, कैन यू कनेक्ट दोज टू, ऑल ऑफ देम टुगेदर? नाउ दैट्स वेयर द रियल क्रिएटिविटी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन. पहले तो आपने न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करो अपने, एंड देन स्टार्ट टू कनेक्ट देम. और कनेक्शन में आपका हाइब्रिड लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनरी, ये सब आएगा. ओके सो व्हाई डू यू थिंक सो मेनी स्टैंड अप कॉमेडियंस आर इंजीनियर्स? क्योंकि टैलेंट तो है उनके अंदर, दे आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स, दे ऑल्सो हैव अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, दे ऑल्सो हैव अ ऑब्जेक्टिव टेम्परामेंट. बट I don't think your profession and your domain decides your personality. It should be the other way around. Your personality should be deciding what you want to pursue in future. क्योंकि ना, like I am dyslexic, I also have a terrible memory. ADHD है, dyslexia है, terrible memory problem है. So I know these limitations will not allow me to do a lot of things. Okay? If my hand has a jitter, I can't become a surgeon. Do you understand what I mean? तो आपको जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे ना, आपकी कैपेबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हैं, यू कांट इवन थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज. इफ समबडी टोल्ड मी कि जॉकी, यू नो व्हाट अ जॉकी इज, नॉट द चड्डी बट द पर्सन हु राइड्स द हॉर्स, राइट? सो जॉकी होने के लिए आपको, यू नीड अ स्मॉलर स्ट्रक्चर. इफ समबडी टोल्ड मी आई हैव अ वेरी स्मॉल बॉडी स्ट्रक्चर, इफ आई न्यू इट आई वुड हैव आल्सो ट्राइड एज अ हॉर्स राइडर, बिकॉज यू नीड लेस मास ऑन द. अगर इतना बड़ा जायंट को बैठा दोगे घोड़े पे, भागेगा कैसे वो, राइट? So also, for example, I've heard about this. I don't know how much it's true, but a smaller body also acts better. I've experienced this physically, but even in spaceships, I'm talking about spaceships. जहाँ physical constraints ज़्यादा है, तो a huge body is going to be a problem. So a smaller body might be preferable. I'm just saying. Personally, because all buses, trains, flights I've taken, I've never had a space issue. बट अ लार्जर पर्सन वुड हैव अ स्पेस इशू. अगर आपके घुटने में चेयर लग रही है तो कितने देर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? इमेजिन यू आर फ्लाइंग अ प्लेन एंड सम बिट इज ट्रबलिंग यू, सम नॉब, सम बटन इज consistently. So you understand, human experience is a very big factor about everything that you work with. And तो वहाँ से आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस लाना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ मत करो, खूब सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, ट्राई एवरीथिंग. एंड ड्यूरिंग कॉलेज स्पेशली, कॉलेज इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम. ये मैं स्कूल टाइम पे बोलता इफ यू वर मीटिंग मी, बट स्कूल जा चुका है. सो नाउ वी हैव कॉलेज टाइम. डू वॉट एवर यू कैन, डू इलेक्ट्रॉनिक्स, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन डू. एंड यू विल रियलाइज लेटर दैट जितनी आप कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे ना, थोड़ा राइटिंग में मजा आया तो राइटिंग कैपेबल हो गई डेवलप. आप 4 पोएम लिखेंगे या 4 ऐसे लिखेंगे, उससे भी डेवलप हो जाएगा, बेटर देन बिफोर. So layer by layer, step by step, keep developing your skills which you like, and eventually you'll realize कि हाँ यार, यहाँ पे मैं I can mix this and I can mix that and I can give a new solution. So I'm mixing my ability to simplify knowledge and understanding of art and design. That's what I'm doing. And I love science. I love all subjects. So I'm a little good at everything, but I'm not an expert at everything. Okay. Thank you so much. I think today all the short people are gonna be happy. If they can see us. Thank you so much. That was really insightful. I'm doing a time check. How much time do we have? As long as you are here, sir. The time is going like
we are thinking that session will go long for this time because there are a lot of नहीं पता क्या questions होता and है we are ओके getting interested. Like, we are getting to learn new things. see it's great to it's there is something called Gyan Yoga. You have heard Hath Yoga, this yoga, that. There's something called Gyan Yoga. Gyan Yoga में क्या होता है when you read something, it triggers a reaction and you get that epiphany and like that eureka moment and you're like अरे ये क्या बोल दिया क्या amazing चीज बोली है. All that is Gyan Yoga. Okay, now that has a shorter life. It is only as good as good as when you're reading it, and as long as it's triggering the moment, and then it ends right after. Okay, or not right after, but it has a fall off. उसका एक dampening effect में वो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी. So ज्ञान योग को आपको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट. So you will have to take away some actionable points to actually practice what we have just talked about. One of it will just stay as a concept. So that will be my personal goal. If you guys can take some actionables from this zone. So please keep noting something. So whenever you're sitting and listening to someone or in a meeting or anywhere, keep a notebook, take a pen, because बहुत सारी बातें होती हैं and keywords note करने हैं. आपको पूरा ऐसा conversation record नहीं करनी है. Things that triggered your attention, your thoughts, वो note करना है, and then it becomes more definitive. So yeah, so I have some points that I want to make. One thing I like to touch upon during this conversation is the emotional well-being side, emotional quotient or emotional body, rather I would say emotional body. And second I would like to talk about is the how to materialize things. Okay, these two things I believe will help almost everyone. Also it's crucial, emotional body especially. So we can go ahead and I'll bring these 2 points later at some point of time. Sure. So, guys, you have any more questions left? Mama, I like to ask one. Yes, go Gaurav, ahead. you mentioned about like art therapy. So coming back to it, like mental health awareness is the need of the hour. Everyone today is being so vocal about it, and people are coming forward talking about their issues. So I like wanted to ask like, and amongst this time, art therapy is like has emerged in one of the most profound ways, very effective and in dealing to mental health issues. So I just wanted to ask, like, your involvement with art, did it help you in dealing with your emotions, expressing yourself at times whether you could use words? So did it Yeah, how? once I made a comic when I was a child in which my brother's some personality traits used to irritate me, and I made a comic where literally I have a very dark humor, which doesn't come because I work with children, but that's the beauty of a human nature that उसके अंदर ना बहुत सारे आपको रस मिलेंगे अलग अलग प्रकार के. So again, it going and touching back upon the when you see people on TV and camera wherever, know that they have a very different side which will not be visible to anyone but their own family and friends only. It's always true. So no need in idolizing someone just because they appear on camera. You can appreciate their work, and you can be specific to what they do. You can say, oh, such a great actor. But a great actor doesn't mean that person is a great husband or a great son or a great person to work with also. There's super difficult people who are great at what they do. All right. So I'm sure Einstein was not a family man. So now that also you have to understand that's where mental health goes, no? That you can't justify just because this person is doing a good job, justifies being a rude and an ass. You understand? So you have to kind of see things objectively and neutrally. And you should be able to see the pros and cons in everything. You should be able to kind of decode these things. See, art therapy, the thing is, as a child, I made a comic. My brother used to appear to me like a miser or saving a little too much. Oh, like एक ice cream. He's a lovely human being. We love each other, of course, and he will love these stories coming out. So he will take a bite of his ice cream and keep it in the freezer because he had that patience. कि अभी he had a मजा like एक bite लिया उसको मजा आ गया and like he'll enjoy this for the whole day or maybe 2 days,
And I like ऐसा कैसे हो सकता है? And I'm on the other side, I gobble things like मैं 2 मिनट में dinner खत्म कर सकता हूँ if I have to. Your college training, rushing for lectures, and also need to have lunch and all. So by nature, I have to slow myself because I'm very fast with things, and I'm also clumsy because my mind का speed and my body का speed match नहीं करता कई बार, and then a lot of you hurt yourself a lot of time, you break a lot of things also. Um, so I made a comic on which it's a long comic, but eventually he even dies in the comic. Okay, I kind of killed my brother in the comic very subtly, but I did. Yeah, he was trying to save money and coming back from school, and that's the premise of the comic. And just to achieve so much of try to save money to that extent that he dies. मतलब ऐसा इतना dark humor था मेरा. But it was fun comic, definitely. So I'm saying, this is also a point of expression. I don't understand what he's doing, so मैंने comic बना दिया and it definitely would have worked. Otherwise, I was expressive all the time with when we say art now, again, we are limiting ourselves to paintings आपके दिमाग में आएंगी, right? क्यों? So next time you think about art, think about every form of art. Include performing arts, include all any n number of arts. Because if you realize कि एक time के बाद ना science and art जाके मिल जाता है, उसका कोई you can't differentiate whether it is science and where it is art. That is the real beautiful work which happens. Like beautiful sculptures, you will see. It was in Heathrow, I think. There's a beautiful structure, must be around 50, maybe 40 feet by, you can imagine like an oval shape. Uska length होगा 50 feet by 30 feet, 20 feet. That's huge. And a volumetric form. And it's made up of these small kind of coins type का एक material है, which is reflective. And each one can rotate either side. Okay. Now that is controlled by either motors or some kind of sensor. So from time to time, a wave goes through the whole structure. Okay, flipping those things, not even digitally, physically. So I can only imagine the amount of engineering that went into making it. But I also see the beauty which has come out in terms of aesthetics and art. Okay, even this pen, which any artist might be using, science made it possible, or the scientific temperament made it possible. Every tool in which we have created is a scientific temperament. I'm not saying it's science and art. Don't objectify it. I'm saying temperament है वो. है सब human beings के part का ही. It's part of you only. Some people have little more of something, and some people have little more of something. So for me, when you say art, it was to do with everything that I can do, which I want to do. So as a kid, with my brother, I made electronic circuits. We found a 1970 magazine called Science Reporter, my father's, and उसके last page में हमेशा एक electronic circuit रहेगा, along with the details of the components that we have. We must be in 8th grade, and we found the magazine. हम ले गए उसको अपने local electronic shop में and बोला कि ये सब components चाहिए हमें. And somehow soldering देख देख के टीवी पे सीख लिया कि हाँ यही करना पड़ता होगा. ठीक है, that's all we have to do as a child. So बाकी सीख लिया, मिस्टेक किया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स नहीं बने, कुछ बने. But do you understand, मेरा ice breaking circuit सा बचपन में ही हो गया. So if I have to go back into college and revisit it, it's not an alien thing for me anymore. All right. So मेरा art therapy भी वहीं पे हो गया because I created something. So all creative work is the same. Whether you achieve it from scientific temperament or you achieve it from artistic temperament, it's actually the joy of creation, which is what gives you that satisfaction. Okay, so I do a lot of wood carving. Do I have a piece here? It's generally lying around. So I just take a piece of wood lying around and I just start carving it. And I put some very little tutorials in the, where is the camera? Yeah. So it's a natural wood, right? And this is also natural. So it's like Ram, Sham bolo, good and evil bolo, jo bhi bolo, because this is like a single eye and this is more, looks a little, and this is the natural phenomena. So you just keep doing something. It doesn't have a purpose exactly, but because I saw wood carving, मैंने बोला ये तो बड़े मजेदार है. The moment you have that feeling कि ये तो मजेदार है, give it a shot. Don't please procrastinate over it, because a lot of your hidden talents might be hidden somewhere there in that spark. So I follow my sparks actually for all my jobs that I've taken. If I don't get a spark,
मजा नहीं आ रहा है, फीलिंग में ही मजा नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं करता हूँ उसको, ठीक है. And but it can also be unrealistic. Sometimes your feeling are actually baseless, like we were talking before. So मेरा feeling आ रहा है from experiences. I've worked with different people and I know how certain industry work. So my feelings are also has a pragmatism integrated into it. That will keep you a little balanced. So yeah, does that answer, Suti? That art therapy can work on many levels and a lot of expression. Indeed. And Okay. really thanks for like sharing the anecdotes. I could relate to your brother a lot more. Yeah, Yeah. he's amazing. So, any more questions, guys? Okay. No, I Thank don't you have. so much for joining in. It was a great session. Like, I can listen to this on and on. But I think I have a curious audience here, and we have some questions storing in the chat box also. So we can take up some questions from there too. Yes, please. So let me know any questions. Either you can put it on my chat here. Achha, Yeah, I just now I saw the Yes. comments. Oh, we are just popping up on the screen itself. There's the okay, question. Yeah. okay. So it is from Suyesh. When it comes to making a profession in teaching, it's something always frowned upon. I mean, most people say to keep this profession a backup. What would you say to people with such mindset? I think that is a Well, great Germany that's question. the highest profession. Well, highest merited or looked upon profession is even Nordic countries like Norway and all. One of the toughest also to get into because education is something which creates every other domain. Do you understand? A teacher creates all other professions now. Matlab you get trained as a graphic designer, you get trained as an engineer. So that is the impact of education. So therefore, teaching is a very noble platform. Now, slowly, definitely, money is also increasing because that's a valid factor. Yeah, why should someone get paid low just because they're passionate about it? So you should definitely have a balance between ki how much money you need for a comfortable sustenance and whether that liking of that field and that it's a match, then you're lucky. um, so yeah, I think the future, I also, you were talking about education. मैंने तो ऐसे भी सोचा है कि if I don't know how many teachers do you have, if you have 5 strong subject teachers from different backgrounds, ठीक है, college level पे भी बोल रहा हूँ मैं, you 100 students get together, pay those 5 teachers who are the best that they can get. So I'm saying कि can people create their own micro colleges? मैं तो बहुत openly बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है. 1000 स्टूडेंट साथ में आए कि हम आपस में पैसा मिलाते हैं, कुछ करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे 1000 स्टूडेंट्स के, लाखों लाखों, अगर आप पता नहीं कितना होगा, देखना पड़ेगा, एक बार मैथ करना पड़ेगा. यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक अबाउट इट. बट इफ द एजुकेटर्स आर ओके एंड यू आर ओके, अब वहां पे ना डिग्री वाली बात आ जाती है बस. यू अंडरस्टैंड? सो गुड एजुकेशन लेने के लिए तो हम काफी जगह से ले सकते हैं. यू नीड गुड टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड आई रियलाइज दैट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन. इट्स नॉट टू डू विद कितनी बड़ी लैब्स हैं आपकी, ठीक है. दैट कम्स मच लेटर. अगर student is willing and has the fire to learn, and if the teacher has the fire to share and is also good at what they do, that's the equation you need. That's a simple equation. Uske aage everything, swimming pool, gym, resources, labs, all that is secondary. You can have all that and bad teachers and you will be, there is no foundation still. You understand? So the thing is कि what if in future, see, the thing is future is going towards collaboration. ये सारे structure break होंगे ही. Now how soon it happens I don't know, but every generation it's going to be a leap. So from millennials to alphas एक होगा, sorry, Gen Z एक होगा, और Gen Z के बाद alpha एक break होगा. So that is something which even if somebody doesn't want, is going to happen. बिकॉज आप पैदा ही एक नए युग में हुए हैं, तो आपका थॉट अलग है, तो आपका लाइकिंग अलग है, तो आपका हैबिट्स अलग हैं, योर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, योर फूड इज डिफरेंट. दैट चेंजेस द कंप्लीट consumption pattern of a whole generation, right? And of course old people are dying, sorry to say, but they are, so their consumption patterns will go out of the picture and new consumption patterns are going to come in. So now we have to keep redesigning for future. Okay, so teaching is a beautiful profession. I love working with students. One is because every time I have a thought, I get 20, 30, 40, 50 concepts coming out. So I'm like, "Arey wah," matlab I get showered in creative ideas. All right, so it keeps me alive.
Secondly, the way to change future completely and permanently is change the person. You make a change to a person, वो permanent change हो गया future में, for sure. And from that person, it will go to the younger people, which means the insights that you receive today, if they become a part of your habits and your thinking, will go down into your work, which means you change the working habits and working zone, and it will go down to your children and the people you interact with, and definitely for teachers because we interact directly with students all the time. So I see teaching as a profession of consciousness को आप mold कर रहे हैं. You are working with consciousness, and therefore I think it's one of the most important thing as an essential service, like medical hota hai, right? So it's a right, and everybody has a right to good teaching, and you should say no to toxic teaching. कोई ज़रूरत नहीं है. So that is one thing which I'll come down to, which is mental health के लिए. We don't. You have to learn how to say no, not for the good things, not for when someone is asking you to make an effort towards your own goals and your own, but say no to toxicity and say no to negative attitude towards working. Okay. ट्रस्ट मी, मिलीनियल्स को भी नहीं आता काम करना आपस में, बड़ा डिफिकल्ट है इनके साथ. ठीक है. So it's an art to work with people, and I know that. So I जहाँ पे conflict होता है मैं लगा ठीक है, conflict हो रहा है, इसको no need to elaborate it right now. Every conflict can wait. Let us start from the point of connection first. वरना आप conflict में फंसे रहेंगे. So you can figure out solutions to conflicts. उसका problem नहीं है, but उसके लिए आपको focus इंसानों से हटा के objective पे रखना पड़ता है. Okay. So ego now was a very big part of my father's generation. I'm saying not my father, but father's generation. I'm saying. अब वो ego को आपको dilute करना पड़ेगा थोड़ा सा, because it's not about you and me. It's about, if I'm working, for example, with Byju's and I'm working with art and animation and video, what do you think is the objective there? So a different objective. Okay, there'll be multiple objectives for different stakeholders. Correct. Let's not say Baiju because then it will become personal. Let's say कॉलेज ले लेते हैं. ठीक है. योर कॉलेज, आपका जो पूरा जोन है, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं और उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? Teachers, Like- students, administration, the directors. maths workers. तो एडमिन है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, राइट? मैं एडमिन को पूरा एक ही कर लेता हूँ अभी के लिए. उसमें भी बहुत सारे अलग अलग रहते हैं, वो बहुत अलग अलग जोन रहती है. एचआर का अलग काम है, देन मैनेजमेंट का अलग काम है, राइट? या पासिंग द एग्जाम, फंक्शन. या सो द थिंग इज, ऑब्जेक्टिव में फॉर गुड और फॉर बैड, अभी सीएसआर एक्टिविटी पे तो कोई कॉलेज नहीं चल रहा है, which means it's not working on trust. I mean not the trust मतलब organization trust जो पैसा लगा के मैं नहीं पढ़ा रहा है कोई, right? It's a commercial activity now, which means money becomes a big part of it. So एक objective होगा to make sure that it is profitable, therefore it can sustain. And ये भी एक objective reality है. जो चीज अपने आप को सस्टेन करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकती है ना, मतलब सब everybody is paid off in the whole process, उसके बाद थोड़ा पैसा बचा है, उसको आप वापस कुछ एक्स्ट्रा लगा सकते हैं टू ग्रो इट. यू अंडरस्टैंड? सो इसलिए वो मैनेजमेंट साइड का जो नंबर्स पे खेलते हैं ना, वो जरूरी होता है, बिकॉज सस्टेनेंस पे अगर आप पहुंच गए ना तो आप बहुत अच्छी जोन पे हैं. अगर आप ₹2 भी प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, उसको हम 4 करके 8 करके 16 करके देख सकते हैं. बट अगर प्रॉफिट ही नहीं है तब हमें थोड़ा कंसर्न ज्यादा होते हैं. ठीक है. सो देयर इज अ कंसर्न, ऑब्जेक्टिव इज अबाउट ऑल्सो प्रॉफिट मेकिंग है, राइट? स्टूडेंट के लिए टू आपको लोगों को क्या होगा, आप दोनों का, फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू? To pass the exam, पास द एग्जाम, gain knowledge बहुत about the subject. To explore more things, as we know that in college life we meet different peoples, different kind of things. As by engineering perspective, to explore many things. As we all know, engineering not just getting the degree. We are learning Develop many your things. personality as a whole. या सी वो है, डिग्री भी पाना एक ऑब्जेक्टिव है हमारे पास. और उसके बाद हमारे पास लर्निंग इज द मेन चीज जिसका आपको आना चाहिए. वो भी कई बार स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती कि लर्निंग के लिए जा रहे हैं, उनके लिए डिग्री के लिए ही जाते हैं कई सारे.
बट अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड है मतलब आप थिंकिंग में इंटरेस्टेड है, मतलब आप कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्टेड है, मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो आपने कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचा ही नहीं, लर्निंग के बारे में सोचा ही नहीं, ग्रोइंग के बारे में नहीं सोचा, सो योर कैपेबिलिटी विल बी लिमिटेड बाय दैट थॉट इटसेल्फ, राइट? नाउ थिंग इज, इतने सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट को पढ़ना भी है, उनको एग्जाम भी पास करना है, टीचर को पढ़ाना भी है, उनको अपनी पर्सनल लाइफ भी चाहिए। स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ भी फन होती है देखो, बट टीचर्स की एंड एडल्ट्स एंड प्रोफेशनल, उनके पर्सनल लाइफ हैज टू बी कट ऑफ फ्रॉम द जोन। A lot of people, like, we love what we do, therefore when we are teaching we are enjoying it thoroughly, but that does not mean that I don't want to cut off from my students from time to time, because zone change करना पड़ता है, it keeps you creative, वरना burn out हो जाओगे आप, right? किसी का तो एक आपको कॉमन वेन डायग्राम में कॉमन एरिया तो सबको ढूंढना पड़ेगा ना दोस्त, सबके अगर अलग ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो वही तो कॉन्फ्लिक्ट है। So what is that common objective with learning that everybody has to come down to? And it is key, I can say it very truly नहीं, confidently rather, कि एजुकेशन आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बना है, आप लोग एजुकेशन के लिए नहीं बने हैं। बट दैट्स अ सैड रियलिटी, राइट? यू अंडरस्टैंड? मतलब पेरेंट्स, यू नो, द आई थिंक ईयरली बजट फॉर इंडियन पेरेंट्स, ट्यूशन, which means apart from paid school, paid college, extra tuition का कितना spend करते होंगे Indian households? Like yearly 1 to 2 lakhs. Yearly. Yes. Lakhs. कितना? 1 to 2 lakh if we see that. हाँ, आराम से ना, ट्यूशन पे भी कर देते हैं इतना। 25,000 करोड़ रुपए पेरेंट्स स्पेंड करते हैं ऑन ट्यूशन। इसमें अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकता कोई? Are you kidding me? So do you understand? It's not a problem of the money or the पैसा सबके पास है, but you have to, वो vision चाहिए अभी, which it's coming back with millennials, which I can see, because we are ready to change things. We are not comfortable with जो चल रहा है उसमें चलने दो, because we are anyways are coming from a flux, हम लोग middle generation है। So you guys have to set your vision कि गुड एजुकेशन क्या होता है, उसको आप पहले डिकोड करना सीखो। व्हाट इज गुड एजुकेशन? आई हैव टोल्ड यू 2 फैक्टर्स, गुड स्टूडेंट, गुड फैकल्टी फर्स्ट। अब गुड स्टूडेंट के क्या, आपको क्या डेवलप करना चाहिए और गुड फैकल्टी में क्या डेवलप होना चाहिए, ठीक है? वन थिंग व्हेन आई सेड कि कॉल मी गौरव, द रीजन वाज कि दैट्स हाउ वी प्रैक्टिस डिजाइन। आई वांट स्टूडेंट्स टू रीच आउट टू मी विद नो either shame or no fear or anything, so this helps. So this is one practice as a good practitioner, right? Secondly, as an independent practitioner, I like to keep my knowledge very vast, ताकि no matter what you throw at me, I have something to say about it, I can relate to it. वरना relate ही नहीं कर पाते कई सारे लोग, right? All your problems are not going to be only around thermodynamics. क्या पता आपने thermodynamics के साथ आपने कुछ और mix कर दिया, तो सामने वाला तो बौखला जाएगा ना, अगर उसका बेस ही बहुत specific है तो। But if you have a wider base, then you can correlate. See, experts are there in the world, right? But you also need someone who has a wider base. So you also need counselor. Teachers also need to be counselors at a certain degree, at a college level, because advice has to be very unique to each individual person. मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, कई लोगों को अप्लाई नहीं करेगा वो, उनका लाइफ बहुत अलग है, right? So therefore it's a very dynamic process. हाँ, आपको continuously evaluate करना पड़ेगा, अब मेरी personality क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूँ। 2 साल बाद अब मैं चेंज हो चुका हूँ, I don't like those things anymore, my company has changed, my things have changed which I like and dislike, and my new responsibilities are, अब मैं क्या करूँ, and so forth. You have to take these decisions very in the as time passes by. So yeah, so you Yeah, can, I hope that answered the question about education. I think it's a beautiful field and we need better educators. Okay, exactly. according to you, are NFT going to revolutionize the domain of art? Will they be totally replacing traditional form of art and artists? One tip for you guys: whenever you pose a question, सबसे पहले pose a question to your own self. It can be a technical question also. Don't read a question and say कि किसके क्या क्या Google करूँ या क्या पूछूं. पहले ना, even if you don't have a base in the question, ask yourself. So over here अगर हम सबसे पूछेंगे तो यहाँ पे mix वो आ जाएंगे reaction. If I ask you, the two of you, what is your
reaction to NFT revolutionize करेगा नहीं करेगा domain of art? Simple yes or no will also do. It's Or maybe. maybe. Maybe, Okay, Definitely. yeah. maybe ठीक है आ गया. Depends. Second question is, will they be replacing traditional forms of art and artists? What do you think? In Yeah, I my think it opinion, can. traditional form is one of the unique thing that can be replaceable by any other thing. And आपका? Yes, it can. It It can can fade replace? away, and yeah, Okay, it it can can fade away. fade away. हाँ, fade If it हो is सकता not है. preserved, it can be faded away. Yeah, easily. Do you know examples of art which are fading away? Traditional art of Rajasthan, like yeah, it is quite fading away right Yeah, now. crafts में आता है काफी सारा art and craft Yeah. like techniques में. See, the thing is, again, like I said, कि art तो रहेगा, right? It's if you remove all objectivity from life, from concept of life and from nature. मैंने बोला objectivity मतलब कि concept of आप atom हटा दो, molecule हटा दो, सारे formula हटा दो, ठीक है? Matter का touch वच हटा दो, क्या बचेगा last में? Space, कुछ बचेगा क्या? It's nothing. blank space. I think emotions बच सकते हैं क्या? क्योंकि Yeah. एटम से तो नहीं बने इमोशन, राइट? सो व्हाट आई एम Yeah. ट्राइंग टू से इज कि अगर ऑब्जेक्टिव में हटा दूंगा तो रस बचते हैं. जो नवरस का थ्योरी है ना, सबने सुना है नवरस. नवरस काफी सुनते हैं हम लोग, है ना, राइट? नवरस कुछ नहीं है. नवरस इज जस्ट डिफरेंट इमोशंस which are present in a human being, and that is what most human beings are actually living for. हम लोग ना नवरसों के लिए ही जी रहे हैं. We are living for the highs and the lows. We are living for that happiness. We are living for joy. We are living for a family, a girlfriend, boyfriend, joy out of work. ये करेंगे, मचा देंगे कुछ. वो इमोशन है दोस्त. Whenever you think, even as an engineering concept, when you think ये करेंगे तो क्या मजा आएगा, that's an emotion. So all our human activities actually are concentrating around emotion, and the science of things gives us an insight, and you can say it helps us crack how to get those emotions from the zone. Okay, so अगर emotions रहने वाले हैं तो art तो रहने ही वाला है, is what I'm trying to tell you. Because हमारा human being का जो beauty ये है कि हम robot क्यों नहीं है, क्योंकि Yeah. हम लोग emotional beings हैं. Emotional. Okay, हमारा कोर इमोशनल है, हमारे डिसीजन सारे इमोशनल है. अगर जब बोर्ड मीटिंग भी होती होंगी ना, आई कैन आस्क इन फ्यूचर व्हेन यू आर सिटिंग इन दोस बोर्ड मीटिंग्स एंड यू आस्क द अदर डायरेक्टर्स एंड ऑल, उनको पूछना आप कितने डिसीजंस प्योर नंबर पे लेते हैं, कितने डिसीजंस फीलिंग पे लेते हैं. कि नंबर तो सामने है, बट व्हाट हैपेंस अगर क्लियर कट डिस्टिंक्शन है कि यहाँ पे नंबर इतने हैं, यहाँ नंबर इतने हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड. व्हाट इफ बहुत आसपास दो चीजें हैं, Yeah, फिर we क्या always डिसीजन? go for the feeling. Emotion. Yeah. एग्जैक्टली, वो गट फीलिंग बोलते हैं Yeah. ना. तो अल्टीमेटली Gut आपका जो feeling. इंटेलिजेंस है ना, सो एआई काम कर लेगा, आपका ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस का काम तो एआई कर लेगा सारा वो करके. दैट्स अ फ्यूचर आल्सो, व्हिच मींस कंप्यूटर इज गोइंग टू डू एवरीथिंग दैट अ कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर कैन डू. नाउ यू डू थिंग्स व्हिच अ कंप्यूटर कैन नॉट डू, व्हिच इज गट फीलिंग. कंप्यूटर के पास नहीं है. ऑलराइट, वो ऑब्जेक्टिव डेटा कई बार लोग इंसानों को, देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड व्हाट दे डोंट टीच यू इन हार्वर्ड, ऐसा एक बुक का नाम है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. That person totally talks about this only ki being street smart is such a valuable skill, because you are dealing with problems every day and you're coming up with solution every day. आप केस स्टडीज पे रिलाई नहीं कर रहे हैं कि उस केस में ये हुआ था तो मैं इस केस को उसमें फिट कर दूंगा, लेकिन वो 19, 20, 10, 15% ही फिट होगा, बाकी का क्या करेंगे, बिकॉज एवरी सिचुएशन इज यूनिक, राइट? सो सो द थिंग इज, एनएफटी देखो आएगा एंड आना भी चाहिए, बिकॉज लाइक आई सेड कि ओपन सोर्स हो रही हैं चीजें. एनएफटी अलाउज ओपन सोर्स, करेक्ट? पहले आर्ट ना बेचारा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दैट मीन्स आई एम पुटिंग समवन डाउन, बट आई फील सैड फॉर द फील्ड ऑफ आर्ट बिकॉज इट वॉज डिपेंडेंट ऑन पेट्रन्स एंड पीपल हु कैन सपोर्ट आर्ट. ठीक है, जब तक मेरे सर पे किसी का अमीर आदमी का हाथ नहीं होगा, मैं आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल. बट ये पेट्रन्स आर सो फ्यू. अब कहाँ है वो लोग, कैसे ढूंढूं मैं उनको? बट नाउ विद NFT द थिंग इज 20,000 people can come and support me at the same time. I don't need one. I can just ask 10 rupees from all of you, okay?
मुझे महीने का 10 रुपए दो, लेकिन 1 लाख लोग रुपए को 1 लाख लोग को मेरा काम पसंद है. Suddenly I'm making music, I'm putting out covers, I'm producing my own album. I'm not dependent on a producer जो बोलेगा कि यार हमें इस पे गाना चाहिए, उस पे गाना चाहिए. मैं independently अपनी art follow कर सकता हूँ with cryptocurrencies and NFTs and otherwise. I can support myself and it reaches out to a much larger audience. Like art का ना it was strange कि pandemic में ज़्यादा auction हुआ है art. Whereas before auctioning used to happen only physically. Online auctioning rare होता होगा. फिर क्या हुआ? Very strangely, people, I guess people were too velas at home and sitting and not doing anything and they have money. क्या करें? लोगों ने people started investing in art. So a lot of online auctions happened, and the sale of art was way more than even like offline. So do you see that now you have a larger base and you're not relying on big bazaar to sell your product? You can sell it on Amazon. And you're not relying on a patron to sell your art. You can go to platforms and you can sell your art. Now the thing is replacing traditional form of art and artist वाला वही चीज है कि देखो art specific art will keep dying and new will keep coming. यहाँ पे designers का एक बहुत बड़ा रोल होता है. यहाँ पे सरकार को आना चाहिए. This is the place where governments come in to retain their culture. Okay, ये कल्चर का पार्ट है. कई सारी जगहों पे सरकार विल नीड्स टू सपोर्ट एंड यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट मूव चाहिए क्योंकि ना क्राफ्ट बहुत उसका एस्थेटिक वैल्यू इतना पुराना हो चुका है कि आप लोग नहीं खरीदोगे. आप लोग इफ आई टेल यू मधुबनी आप लगाओगे घर पे, a lot of you will like क्या करूंगा लगा के, क्यों लगाऊंगा इसको मैं, right? But what if you have a Madhubani painting, style is there, but content change कर दो. What if it's a graffiti like a intense like topics going on and hybrid also? I don't know. I'm just talking very open ended. But कुछ तो देखो ऐसा है कि we have to also accept कि some of the natural death to certain things will come. But it does not mean कि सब कुछ खत्म हो जाएगा. And it's our onus also हम क्या आगे लेके जाना चाहते हैं क्या नहीं. We can't crib on next generation saying कि यार हमने अगर मधुबनी खत्म कर दिया तो हमारा onus है ना. हम में से किसी ने participate नहीं किया उसमें, तो we are equally participative. So and मधुबनी की एग्जांपल दे रहा हूँ. इतने सारी आर्ट हैं जो हमें पता भी नहीं है. So ये तो बहुत फेमस वाली हैं जो एक्सपोर्ट होता है. But there is handmade in India. There is a beautiful book, joint work by Aditi Ranjan and MP Ranjan. It's some culmination of all the art and craft they could put together in a book, state-wise, district-wise, city-wise, and so on and so forth. अब वो इतनी मोटी बुक है. You know so many crafts in India. Each page has multiple. No. So again, it comes down to our exposure कि हमें कुछ पता ही नहीं है. So yes, I think I'll. Yeah. I hope Harshita got her answer. Our audience also get the answer of this question. We have one more question from Priya. Developing perfect sketching skills take years, but how much quality time does one need to spend to achieve hyperrealism in portraits? Half of the factor is again comes to you. Every equation will have two factors. One is you and one is whatever other part we're talking about. आधा तो आपके कैलिबर के ऊपर आएगा वापस. Do you have the exact micro skills required to achieve hyperrealism? So आपको पहले डिकोड करना पड़ेगा hyperrealism के लिए चाहिए क्या. आपको चाहिए, लेकिन hyperrealism को क्या चाहिए? You want hyperrealism in your skill set, but what does hyperrealism as a skill needs? It has micro sub skill set. Okay, so we don't realize कि beauty actually is not to learn, it's to develop a sense about. आप ब्यूटी सीख नहीं सकते हैं, आप उसका सेंस डेवलप कर सकते हैं. वो सेंस है. समवन हु हैज अ गुड सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, वो ग्राफिक डिजाइनर बनेगा, वहां पे भी ब्यूटी निकलेगा. वो इंजीनियर बनेगा, वहां पे भी वो दैट फॉर्म एंड कलर्स विल कम आउट. बाकी ट्रेनिंग पे रहता है कि सेम पर्सन, इफ दैट पर्सन वाज नेवर गिवन ट्रेनिंग इनटू आर्ट, ऑफ कोर्स वो लिमिटेड रह जाएगा. समवन हु इज गिवन ट्रेनिंग इनटू डिजाइन एंड आर्ट एंड विजुअल कम्युनिकेशन, उसका वो डेवलप कर जाएगा, राइट. सो हाइपर रियलिज्म के लिए पहली चीज आपको चाहिए सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट. आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल लाइट. If you can watch the phenomena of light happening around you, like right now, if I can switch off this light, do you see
different details? And if I switch on this light, do you see different details? And which one do you like more? Okay. एंड सो ये सेंस जो है ना, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप डेवलप कर सकते हैं और किस हद तक डेवलप कर सकते हैं. Because ultimately, when you're doing hyper realistic, it's every square millimeter or inch or centimeter has a different tonality, shadow play happening. उतने वो atom level पे भी घुस जाता है. Some people will be able to actually map out lighting falling in that. So पहली बात तो हमें वो sense develop करने पड़ेगा of watching light and how it pans out. So second is, क्या वो जो मैंने सेंस कर लिया कि हाँ यहाँ पे ग्रे का एक टोन है, वो मेरे हाथ से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, वो मेरे मसल का प्रॉब्लम है. तो क्या डू आई हैव अ कंट्रोल ओवर माय मसल कि नाउ फाइनली आई हैव द सेंस ऑफ लाइट एंड शेड एंड कलर्स, आई कैन रियली ऑब्जर्व रियली केयरफुली एंड नाउ, बट कैन आई रेप्लिकेट दैट कलर, वो सेकेंड डिग्री प्रॉब्लम है. तो वो दोनों का सिंक के हिसाब से आपका हाइपर रियलिज्म क्रिएट होगा उसके अंदर. ओके, बट मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा आपको कि ना आप लोग को थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा. अगर हाइपररियलिज्म चाहिए आज करके खत्म करो, आगे बढ़ो. डोंट गेट स्टक ऑन अ स्टाइल बिकॉज स्टाइल्स आर वेरी फ्रूगल. बहुत छोटी चीज है स्टाइल. हाइपररियलिज्म भी ना बहुत छोटी चीज रह गई है. वो तब अच्छा था जब कैमरा नहीं था, अभी उसका वैल्यू इज नॉट एज मच. बट डज नॉट मीन दैट यू, आई एम नॉट डिमीनिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग द इट माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, but if you're looking as a profession, it might not take you too far away. You will again use the capability of replicating light and shades and forms that control our muscle and the sensitivity of the eye and then mix concepts in it and then use hyperrealism. But कुछ concept दो साथ में मुझे, क्योंकि हम जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, स्किल की वैल्यू कम हो रही है. कंप्यूटर्स कर रहे हैं, रोबोट्स करने जा रहे हैं, ठीक है. एंड वैल्यू ऑफ थिंकिंग इज कमिंग इन. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कैनवा आप सब लोग यूज करते हो. कितना कैनवा यूज किया होगा आप लोगों ने इस फेस्टिवल में? करा होगा ना. वेरी फ्यू पीपल वुड हैव गॉन इनटू इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, कम लोगों ने गए होंगे. तो आपको नहीं लगता कि ग्राफिक डिजाइनर्स का जॉब पे हिट हुआ होगा जब कैनवा आया होगा? सपोज कर सकते हैं. सो कैन यू मैप की दुनिया किस तरफ जा रही है? ये रियल टाइम एग्जांपल्स आपके सामने. जो स्किल था सॉफ्टवेयर का, तो जिसको इलस्ट्रेटर आता है, कोरल ड्रॉ आता है, वही कर पाता ग्राफिक डिजाइन. वो इक्वेशन ही हटा दिया. आपको नहीं सीखना सॉफ्टवेयर, आपको सेंस चाहिए, वो भी हटा दिया. आपको टेम्पलेट ही दे दिया उन लोगों ने. बट किसी के पास अच्छा सेंस है, वो आफ्टर वर्किंग 200 वो 201 वाला तो बना लेगा खुद से. वो भी हो रहा है ना, आप एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, टेम्पलेट्स भी तो आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना. सो द थिंग इज दैट यू हैव टू लुक इनटू कि इससे क्या करूंगा मैं. अपना ऑब्जेक्टिव स्किल्स पे मत रहो. ऑब्जेक्टिव स्किल्स से क्या करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू है मार्केट में. एंड एज थिंग्स आर गोइंग बाय, कन्वेंशनल पीपल आर गेटिंग आउटडेटेड आउटराइट. जो लोग कॉन्सेप्ट्स, जो लोग सोच सकते हैं ना, हमें थिंकर्स चाहिए. व्हेन आई से थिंकर्स, आई शुड बी एबल टू गिव यू अ प्रॉब्लम एंड प्लीज आंसर इट. मतलब अभी नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये प्रैक्टिस है ऑफ आंसरिंग, putting yourself through a challenge of answering something that you're not sure about. So ये बहुत ज़रूरी है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, बिकॉज आपको गलती करनी ज़रूरी है. जब आप गलती करेंगे ना, और कोई टोकेगा आपको कि यार आपने ये सोचा, ये बनाया, ये करा, इसमें ये गलती है, वो छप जाएगा आपके दिमाग में. सो पेन पॉइंट इज ब्यूटिफुल थिंग्स बिकॉज दे स्टे विद यू फॉर एवर. जनरली आप दूध का जला जो बोलते हैं ना, okay, so दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते हैं. I'm saying कि be very proactive at making mistakes. आप जितनी गलती करेंगे उतनी जल्दी ग्रो करेंगे. Pain is the fastest evolutionary factor in life. So I personally, somebody told me, मतलब उन्होंने मेरा कुछ सुना and they're like, do you like being in uncomfortable situations? मैंने बोला ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं. They said कि do you like putting yourself through uncomfortable situations? And then when I mapped my activities I've done in life, then yes, most of my activities were painful and I've purposefully put myself through painful activities. I've been lost in mountains on a solo trip because I want to do solo. I've totally been through many accidents also. I've taken up jobs like, I've taught in a rural school in Jaisalmer for a year.
Now I've stayed physically in a classroom as my room. मतलब मैं दिन में वहां पढ़ाऊंगा, रात को उसी क्लासरूम में सोऊंगा. Do you understand? And this is after heart attack. This is not before heart attack. This is not in the making or something. You understand? Why would I do that? The question is, do you have an answer to that? Why would I put myself through the pain of putting myself in a village and teach in a school there? Challenge yourself Why though? उससे क्या होगा? To evolve the personality, to to get something different that we giving in a simple to, trend. to extend your reach, to push your limits, to know what better, how better you can do. या एग्जैक्टली उतना ही है वो, है ना? तो आई कीप पुशिंग माई सेल्फ. एंड इतना इसका दूसरा पार्ट ये है कि अब कुछ एक्सपीरियंस मुझे चाहिए. वो एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा उसी जगह पे. अगर मुझे रूरल सेटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए तो रूरल सेटिंग में मिलेगा ना. मैं वीडियो देख के थोड़ा ना लूंगा उसका एक्सपीरियंस, राइट? देन यू आर चीटिंग योरसेल्फ, एज सिंपल एज दैट. सो यू हैव टू लिव देयर. एंड थिंग इज कि मैं स्कूल में गया, either I can just for first week I was also trying to send ki kahan rehna chahiye, should I stay near the school, should I stay in Jaisalmer, because school was little further away. Eventually I did stay in the शहर. I took a room and I stayed there, but initially I stayed in the school क्योंकि वहाँ पे रूम नहीं थे रहने के लिए, but classroom है. So while I'm figuring out, I'm ठीक है. अब होता क्या है ना कि if I remove my body comfort to a certain degree, it makes my life easier. वरना मैं कई सारी जॉब्स ही नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कंफर्ट लेवल नहीं है मेरे हिसाब से उसमें. बट मेरा जो पैशन है, मुझे कुछ चाहिए तो मुझे चाहिए होता है. उसके बाद माई ओन कंफर्ट इज नॉट अ फैक्टर. माई विल इज स्ट्रॉन्गर देन माई कंफर्ट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yeah. Yeah. हाँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपको चाहिए नहीं चाहिए. अगर चाहिए then don't look into what it costs you. Then the cost is a fair enough something you want to pay. अगर If you कुछ really चाहिए want. तो फिर सब छोड़ दो उसके लिए, बस उसी पे ध्यान दो. छोड़ने की बात नहीं बोल रहा हूँ, वो एक्सट्रीम है. It was like कि you have to step out from your comfort zone. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बिल्कुल. Yeah. एंड फॉर एवरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर आप देखो लार्जली अगर आप डिकोड करोगे, दुनिया में इंसान इंसान के लिए ही बनाता है. सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आर अराउंड दिस थिंग. ठीक है? Yeah. वो भी अ लॉट ऑफ एनिमल्स हैव कम थ्रू. वो ऐसा हमने थोड़ा सा उनका हेल्प कर दी, वरना वी आर ओनली डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर फेलो पीपल. ठीक है? बहुत बहुत नार्सिसिस्टिक एक एक ह्यूमन बीइंग्स का एक अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, व्हिच इज इट्स ऑल फॉर अस, as simple as that, right? For our comfort level. हाँ, तो the thing is that you have to kind of understand कि कुछ चीजें you have to understand what it comes with. and अगर आपको चाहिए तो आपको वो करना तो पड़ेगा, देखो, right? and rural sector में मुझे क्यों चाहिए था, because it's almost 60-70% of education might be happening in that zone. तो अगर मैं एजुकेशन में हूँ तो हाउ, इफ आई एम रियली पैशनेट अबाउट एजुकेशन एज अ होल, आई कुड हैव बीन स्पेशलाइजिंग इन इंटरनेशनल एजुकेशन ऑल्सो और डिज़ाइन एजुकेशन ऑल्सो, विच आई डू. बट वो एक फैक्टर मुझे चाहिए, बिकॉज फॉर मी पर्सनली एज पार्ट ऑफ माई कैरेक्टर, दैट्स द बिगर इंडिया दैट आई एम लुकिंग इन टू, यू नो. तो आई हैव टू बी विद देम. एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस की मैं जो बात कर रहा था ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदर यू एन इंजीनियर, डॉक्टर, accountant, you will work with people. So you have to now understand people. The human psychology should become a standard subject across all subjects. Knowing human beings. There are workshops in Silicon Valley जिसमें behavioral change के बारे में workshop होते हैं for IT based firms. उनको ये सिखाया जा रहा है कि आप human beings को कैसे manipulate करेंगे. ठीक है? तो commercialization तो चल रहा है on a workshop level. बट उसको क्या हम अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो सेम नॉलेज. Yeah. So the keywords we are looking into is behavioral knowledge, behavioral change, and human psychology. And so therefore, because आप किसी के लिए तो डिजाइन करेंगे ना, ह्यूमन बीइंग ही होगा अल्टीमेटली, लार्जली. एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स करते भी हैं कई लोग, बट लार्जली आई एम सेइंग. सो अगर आप ह्यूमन बीइंग को नहीं समझते हैं ना, तो आपका हमेशा एक आउटपुट विल ऑलवेज बी लिटिल लेस देन व्हाट इट कुड बी. Simply understanding human beings better will give you an edge over everyone else. You can work in a team better. You can give them what they also don't know sometimes. Okay. Yeah. There's so many.
So We have we have one more question. Please share insights on organized thinking, like how we can systematically align our chaotic thoughts and translate them nicely on the canvas. Okay, so Rita is asking this. So see, brainstorming session ना अभी there are some more collaborative softwares. Miro करके एक है, Miro या Miro, I don't know how to pronounce it. MIRO. एक उसका नाम जैम बोर्ड भी है, फिर आपके पास म्यूरल भी है, कई सारे हैं ऐसे. What they allow you to do is they give you very simply sticky notes, arrows, connections. You can put a PDF, you can put an image. Open canvas है, उसकी बाउंड्री नहीं है. ऑलराइट. प्रॉब्लम क्या होती है जब हम गूगल डॉक्स पे जाते हैं ना, आइडियाज 1 2 3 4 डेवलप होना शुरू होता है लीनियर फॉर्म में. द प्रॉब्लम ऑफ हमारा लिमिटेड थिंकिंग इज ऑल्सो लिनियरिटी ऑफ लाइफ. हम जितना लीनियर रहेंगे उतना हम डाइवर्जेंट कैसे होंगे, दोनों ऑपोजिट हैं, राइट. सो देयरफॉर ओपन कैनवस के आपको अलाउ करता है कि आपने अपने सारे आइडियाज रखना शुरू करें. यहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे एक सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट को मैंने एलैबोरेट किया, यहाँ पे उसका मैंने कुछ रिसर्च वर्क के PDF डाल दिए, उसके नीचे मूड बोर्ड भी डाल दिया, उसके राइट में ये भी डाल दिया, और एक कैनवस ही रहेगा वो ना. इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ सिटी मैप. छोटा सा मिनी मैप आ जाएगा, उसमें आपको नेविगेट करना पड़ता है जब 40 लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं साथ में. ओके. बट द ग्रेट पार्ट अबाउट दिस माइंड मैपिंग इज कि पूरा एक साथ आप देख सकते हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. डॉक्यूमेंट में अगर 40 पेज का डॉक्यूमेंट है, जब तक 40 पेज पे हो तो पहला पेज भूल गए आप अभी तक तो क्या चल रहा था उसके अंदर. बट जब एक कैनवस में सामने है ना, तो विजुअल परसेप्शन हमारी एक बहुत बड़ी पावर है ह्यूमन बींग्स की. वी कैन कैलकुलेट रियली क्विकली विजुअली. 70% स्पीड, 10% एनर्जी. एनर्जी तो ऐसे ज़्यादा यूज होती है, ब्रेन पावर. बट इन टर्म्स ऑफ क्विकनेस एंड क्विक प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है. 10x, maybe 20x, I don't know. But so use these open canvases to do brainstorming session. उसके बाद ना, see, I've also kind of what I also kind of tried when I say that education and learning is very very simple. उसमें यही है कि I'm trying to think whether my understanding has come through time, so whether it's so simple for you, which is simple for me, which is kind of understandable. But you can follow some process maps को एक बार आप सर्च करो, ठीक है. हम क्या करते हैं, पहले ना एक्सपैंड करो बहुत कुछ, जितना एक्सपैंड कर सकते हो उसको एक्सपैंड कर लो. ऑलराइट, सब कुछ डाल दो जितना डाल सकते, कुछ मनाही नहीं है. उसके बाद सेट योर फोकस पॉइंट. हम ऑर्गेनाइज थिंकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा एंकर बनाना पड़ता है हमें, और वहां पे हम थोड़ा मात खा जाते हैं बिकॉज हम वो एंकर पॉइंट में कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई बार हमने सेट नहीं करा होता है. एग्जाम्पल इलेक्ट्रोथॉन, अगर आप लोग यहाँ पे स्पीकर्स बुला रहे हैं तो आप कौन से स्पीकर बुलाएंगे. नाउ वन थिंग इज इट कुड बी वन सेकेंड, वन थिंग कुड बी दैट पीपल यू लाइक गौरव पसंद है तो हमने बुला लिया, राइट. अनदर थिंग इज कि यू कैन कॉल रेलेवेंट पीपल हु आर अराउंड द थीम. दैट्स एन ऑर्गेनाइज थिंकिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो पहले आप सारे आइडिया डाल दो, उसके बाद चूज करना शुरू करो कि हमारे ये एंकर की वर्ड्स हैं जिसके अराउंड हमारा विजन है, उसके हिसाब से देन उसको फिल्टर करना शुरू करो. एंड ऑलवेज हैव अ फीलिंग ऑफ कि हम क्या देना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ इट. दैट शुड बी योर कंपस, मॉरल कंपस, कि हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस देना. आई थिंक दैट शुड बिकम योर मॉरल कंपस फॉर एवरी एक्टिविटी. आई नीड टू डू गुड जॉब, आई नीड टू गिव अ गुड एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस को एक्सपैंड करने जाओगे तो पता नहीं कितना कुछ निकल जाएगा, ऑडियो, वीडियो, टच, स्मेल, ये वो, इमोशनल, दिस दैट. सो बहुत बड़ा एक्सरसाइज है ये, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू इन अ वेरी शॉर्ट. फर्स्ट यू एक्सपैंड एंड देन यू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू अ फनल दैट यू क्रिएट. बट एक्सपेंशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. दैट्स वेयर द क्रिएटिव आइडियाज आर जनरेटेड एक्चुअली. So Okay, I so think we can, we'll also be streamlining the session now a little bit. yeah, I also have just some a questions last now. question from our Yeah. audience. Yes. A question from Isha. How has Art Attack helped you grow as a person? What did Art Attack teach you? You know, the first heart attack was so painful because I'm not a performer. I was never an actor. School में भी नहीं किया. So you can say in my character, performing was not a part of the zone. I learned it. And a part of my character is also जब ऐसा हो जाता है ना कि when you're in war, जब और कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको काम मिल चुका है, either fight or flee, मतलब या भाग जाओ या कर लो. So then I give everything in. I'm like, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो करना पड़ेगा. Now, although it's not
coming from my heart and my nature, which means it's a conflicted zone. So performance, I was given hardly any practice time. And for a person who's never faced camera, never done theater, never acted before, if you just put them on camera and say, "Ab karo," so it is a nightmare. Honestly, it's a nightmare. And to look happy when you're sad, it's. Do you understand the cost you have to pay again? That you're always happy and excited, but maybe you're not feeling like that. All that privilege is in every other job, but not as a performer on stage, on camera, right? So that was a tough bit. But आर्ट अटैक ने मुझे एक तो पब्लिक स्पीकर बना दिया, थोड़ा मुंह फट, थोड़ा shameless to be there, talk to you. It introduced me to students. Like I said, that's the biggest factor I see. Definitely gave me a lot of fame, which I'm really grateful to, because although honestly I wasted a lot of that fame, I never did. लोग क्या करते हैं ना, who is a business mind, वो लोग ट्यूशन क्लासेस ये वो हजारों चीजें शुरू कर देते हैं around a brand, which I do have. I don't have classes and all, but the thing is, उसमें ना energy चाहिए. Again, it costs you thing. I have 365 days a year. I have 24/7. So I would rather chill and not do anything than try to develop what is given to me. Brand बना के उसको multi-million कर लो, वो ठीक है, उसमें उतना मजा नहीं आता मुझे. But the thing is, yeah, it gave me a lot of these capabilities and put me out in the world, and it has given me a very काफी स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया. मेरे रस नवरस में काफी सारे रस आ गए मेरे पास हार्ट अटैक की वजह से. Yes, so it was a very important role. Yeah, so it's, see, the thing is, you have to kind of remove those 2-3 एग्जांपल जो दिमाग में सेट होते हैं ना, कि अरे एलॉन मस्क बन जाएंगे या आइंस्टाइन बन जाएंगे और ये बन जाएंगे. ये बहुत छोटे एग्जांपल हैं. ये 7 बिलियन में आप 3 एग्जांपल देके कैसे बोलोगे कि सब इसमें फिट हो जाओ, राइट? इट्स अननेचुरल. ये सब आपको हटाना पड़ेगा. प्री प्रोग्रामिंग, दे आर गुड, इंस्पायरिंग. सो व्हाट आई विल लर्न फ्रॉम एलॉन मस्क इज नॉट कि वैसा बनना है. I'm like, finally, there is a person who is putting his money into businesses where other businesses will not put. Okay? Yeah. So, पैसे का क्या है ना? पैसा is, there is a danger thing about money, which I will also tell you, which is, you should not lose yourself around money. It should not drive you, which means you should not start taking all your decisions in life based on money. Rather, you take decisions to create more money. No problem there. You can become a billionaire. But don't lose yourself. There are certain personalities who have as much passion as much I might have for learning. They have that much passion for business. Amazing. Naturally, that person will succeed, right? But the thing is, there are many ways to earn money. But आप लोग को ना, like I was saying, I have to cover this point, which of emotional quotient वाला जो point था. Emotions will either elevate your performance or diminish your performance. Emotions are something which don't sit on the sideline. Okay? वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, मेरे पास, किसी के पास भी. जब तक ह्यूमन बींग्स रहेंगे या सारे जानवर भी, वी अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स वेरी लिटिल. एवरीथिंग हैज इमोशंस. ओके? हमारा एक्सप्रेशन लेवल बहुत हाई है, बस इतना ही डिफरेंस है. बट द पॉइंट इज कि अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो आप ना तो क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, ना कोई प्रोजेक्ट है वो कर पाओगे. कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे. सो पहले आपका सबसे पहला टास्क होगा टू स्टेबलाइज योरसेल्फ एंड सेटिस्फाई योरसेल्फ. इफ यू आर सेटिस्फाइड, यू विल बी स्टेबल. ओके? सो सेटिस्फाई योरसेल्फ इमोशनली. तो जितना आपके पास ये टू डू लिस्ट है ना, बकेट लिस्ट होती है हम सबकी, छोटी चीजें बड़ी चीजें, including partying on a weekend, that's perfectly fine. Going to Mathiran or going to Goa, going to wherever, Switzerland, doesn't matter. Complete करते रहो. जो बकेट लिस्ट आप आज कर सकते हैं 1 घंटे में, वो तो अभी खत्म कर दो. जिसके लिए आपको 5 साल चाहिए, वो आ जाएगा. बट कीप सेटिस्फाइंग योरसेल्फ इमेंसली, ताकि आप सेटिस्फाइड रहें. अगर आप सेटिस्फाइड रहेंगे, तो देन थिंग्स डोंट ट्रबल यू. ऑलराइट? सेकेंडली, हैव वेरी learned something which I call as positive shamelessness, which means we are shameless about the wrong things, and we are shameless about we are shameless about the wrong things. हम पान वान थूकते रहेंगे, कचरा फेंकते रहेंगे, वो उसमें हम shameless हैं एकदम. उसमें कोई शर्म नहीं है हमें कहीं भी. But when it comes to अपने थॉट्स बता दो, वहां पे हमें फियर और शेम आ जाएगा. अरे मैं बताऊंगा तो क्या होगा, ये सोच लेंगे, वो सोच लेंगे. But we are never thinking when we are shouting in public, when we are creating nuisance in public, चिल्ला रहे हैं कहीं बैठ के, उसमें हमें कभी shame नहीं आएगा.
बट एक्चुअली जो आपके लिए अच्छी चीजें हैं वहां पे पूरा शेम भरा हुआ है, तो आपको पूरा इक्वेशन को रिवर्स करना है. So which means कि express yourself, put your foot down and put your ideas out. You understand? उससे Yeah. आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. बिकॉज जब कॉन्फ्लिक्ट सामने मैं कुछ बोलूँ और मुझे गलत साबित हो गया ना, आई एम एक्चुअली अ बेटर पर्सन नाउ, बिकॉज नाउ आई नो व्हाट नॉट टू से, और एटलीस्ट किसके सामने नहीं बोलना है. True. एंड इट ओनली कम थ्रू एक्सपीरियंसेस. तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जनरेट करता हूँ अपने लिए, बहुत हाई अमाउंट में, बिकॉज मेरा है कि सब जगह से सीख लो. आई एम लाइक अ सकर फॉर लर्निंग. So, but at the same time, then I want to chill and not do anything. तब मैं कुछ नहीं करता हूँ. And my favorite pastime is also thinking. I love thinking. So, so be shameless, okay? And courage is only that thing which will take your generation forward. हमारी generation अब अभी education में क्या system है? आप teacher बन गए हो. Conventionally, I'm talking about. It's a easy job for people जिनको stability चाहिए. Okay? तो PhD पूरा एक पाथ पहले से सिक्योर कर लेते हैं. हाँ, ये होगा वो होगा, पहले से 20 साल का प्लान बन के निकल जाता है बाहर. अभी के एजुकेशन में क्या है ना, वी से नो कि हम इस तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं और इतना टाइम हमें चाहिए. सो वी आर नॉट worried about our job security as much as we are worried about what experiences and what I'm doing with my job. I want to take accountability for your work completely. All right, it's a good thing. आपको ब्लेम मिलेगा लेकिन क्रेडिट भी आपको मिलेगा. ऑलराइट, एंड ब्लेम लेने में दिक्कत नहीं है. बोलो हाँ ठीक है, गलती कर दी ना, हो गया. जब तक लाइफ एंड डेथ नहीं है तब तक लोड नहीं लेने का. इट्स ओके. कॉलेज लाइफ में तो लोड ही क्या है यार. योर डिसीजन आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग डाउन अ कंपनी बाय 15%. उसका इक्विटी लॉस नहीं हो जाएगा कहीं पे. तो करो जो करना है. College life is all about fun and learning new things. हाँ, Exploring. अब उसमें बोरिंग चीजें भी आएंगी, उसमें टफ चीजें भी आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, वो सब होगा. बट जो अवेलेबल है वो तो कर लो ना पहले. मतलब सच अ ह्यूज बुफे, खाओ बैठ के आराम से. Yeah. So I think there are uncountable takeaway points that I can take I this know. from this session. But due to time crunch, I think sadly we'll have to stop here. So I think we can come to the end of our first talk of Electrothon 4.0, and a bunch of stories, experiences, life learnings, all brought to life by you, sir. So we truly cherish all this insightful experience, and we thank you so much for sparing your time. And we also like to thank the audience for sitting with the patience and making this evening more wonderful. Thank you so much. Have a great day. No, thank you people. Thank you. Thank you. And I know I can't answer all the questions, but धीरे धीरे ये conversations होते रहेंगे, तो I'm sure we will. And now go and do your bit. Be proactive. Yeah. Keep exploring नए medium, नए domain, नई skills. Keep adding to your. Okay, and Yeah. okay. Yeah.